तो मैं आपको बताता हूँ खाने में क्या क्या है। राइस है और प्रॉन है और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जेली फिश है, यहाँ का जेली फिश। With the kayak, it is so easy to overturn. So everyone don't go near the mountain or do something like this on the kayak. Yeah. And if you carry your phone, your camera, carefully drop down to water because here is more than 100 phones under the water. 100 So phones? be careful with your phone. Wow, it's very And we safe. just stop, sit down on the boat. I'm leaving my phone here. हाँ, Nah, no capsizing today. ओनली GoPro। Yeah. या Please remember the सो अब हम लोग जा रहे हैं कयाकिंग करने के लिए। तो यहाँ पे पता है एक चीज़, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फ़ोन पानी के अंदर डूब चुके हैं कयाकिंग करने के दौरान। तो इसलिए हम लोग सारे लोग जितने भी हॉस्टल के लोग हैं वो सारे लोग अपने फ़ोन को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं कयाकिंग करने। Right now we have 5 minutes. Let everyone prepare everything. Those definitely. Okay, bye. This one is for the kids. Đánh hồ lại cái lái, đánh hồ lại cái lái cái. Right now we will get floating house and you should take the tour. Yeah. Who is the bad driver? You? Oh, Alright, thank you. you should sit on the back. Behind. Sitting in the back. तो अब कयाक करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत छोटा बोट है। तो ये भाई साहब जो जर्मनी के हैं, ये पीछे बैठेंगे। क्या? When I was a kid. You say now, okay? Yeah. Only right side. Yeah, nice to meet you again. Oh, you are very fast. Yeah, I take care of it. These people right there. Oh, sir. Oh, Which one we find? Ryan. so how? Yes, Ryan. Oh. Hey, crash. Sorry, bye. नाउ अब हम लोग आगे एक केव है, छोटा सा ही केव है, उसके अंदर से कयाक करते हुए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो केव कैसा है। लेकिन काफ़ी अच्छा नज़ारा है और यहाँ पे कयाक करने काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है।
काफ़ी मज़ा आ रहा है ना। और यहाँ पे बहुत जो केव है वो बहुत सारे डिफरेंट शेप में है। आप देखेंगे, मैं ऊपर दिखाता हूँ। Hey guys, we are here in Katba and exploring the island a bit. So we are doing kayaking now and it's amazing here. So I can show you a bit. That's the area. And yeah, we are doing just some kayaking and it's amazing here because no other boats are available. So you have to go with the boat to the spot and then it's only possible to go through the caves with the kayaks. And yeah, it makes a lot of fun, and I think that's yeah, okay. And yeah, on the boat tour we were able to jump from the boat into the water, and yeah, you have to do it once. I think it's so nice. So yeah, definitely recommend it. Go to the Halong Bay in Vietnam, and yeah, visit the places. It's so nice, and you met so nice people if you also do it alone, and you go into hostels and. Yeah, you just can join to a group and it's amazing. Now we gonna have some lunch on that boat and then we go to another stops and yeah, I am looking forward to see the next stops. So see ya, thanks. So ये थे हमारे रूममेट जॉनी भाई, जो कि आपको अपनी यात्रा का वृतांत आपको बता रहे थे। सो फिलहाल अब टाइम हो गया है बोट पे जाने का और वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे और फिर हम कोई और बीच पे जाएंगे जहाँ पे इनका भी Finally, I have done the kayaking. Me and my friends Johnny, हम दोनों साथ में गए थे kayak करने के लिए और सबको यहाँ पे पार्टनर एक करके देना पड़ता है। चलते हैं बोट के साइड। Now अब टाइम हो गया है लंच का। 5 minutes, and then you can get the bird. चलते हैं लंच करने और देखते हैं कि लंच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर सी फूड ही होगा और बाकी पता नहीं क्या होगा। And how many people do you have? 2 people outside, 3 to 4 people. 4 people? So 4 people to sit here? Yeah. Okay. So here is the fish. And this one is jellyfish salad. Okay. So just egg. Shrimp. Can't eat. Do you have any? We have some vegetable. Yeah. Can I get some fish? So यहाँ पे खाना परोसा गया है। यहाँ पे एग है। This is prawn, I think. Yeah, can you? Prawn, and this is Crab. okay. And what is this? Fish. Oh, fish. हाँ, सी फूड है। चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ पे। Right? It's good. It's okay. You should yeah. Hey, We have a bowl. तो मैं आपको बताता हूँ खाने में क्या क्या है। राइस है और प्रॉन है और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जेली फिश है यहाँ का, जेली फिश। एंड अपने इधर तो घोंगा बोलते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। देन कुछ लिक्विड जैसा है एंड देन फ्रूट है, बियर है एंड कोल्ड ड्रिंक है, एग है। What is this? I don't know, oyster soup, I guess. This is soup. Yeah. Or like This is soup. Jellyfish is very tasty.
is off there. या That was funny. तो अब हम पहुँचे हैं एक बीच के किनारे। काफ़ी खूबसूरत सा बीच है, सैंड है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी बोट करीब 1 घंटे यहाँ पे रुके थे। सो 1 घंटे तक हम इस बीच के किनारे। तो अब जा रहे हैं स्विम करने के लिए।